अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू शाह फैमिली। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग आएगा और इस फर्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपना पहला उम्रा परफॉर्म करते हुए दिखाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और बड़ी स्पेशल जर्नी होगी। पहले मैं जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ मक्का में इंशाल्लाह, फिर उधर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद 3 डेज स्टेज के बाद फिर मैं जाऊंगा मदीना में। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है मेरे साथ खूबसूरत जर्नी में। जिस तरह का सुकून मैं हासिल करूंगा उस तरह का सुकून मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बने रहना है, प्रिपरेशन से लेके उम्र तक। मैं आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन से और आप हमारे साथ बने रहें। ये मैंने चप्पल ऑर्डर की थी उम्रा परफॉर्म के लिए। कहते हैं कि वो दूसरी चप्पल नहीं चलेगी क्योंकि उसके ऊपर जो कवर नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ से बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ये वी शेप में जो चप्पल है ये चलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास दूसरी चप्पल भी थी मगर ये जो है इस तरह की होनी चाहिए। तो ये मैंने ऑर्डर की थी ताकि ये कैसा पहन के, क्योंकि पाँव आपके जो है ना तो ये नंगे होने चाहिए इस तरह के। अच्छा ये जो है ये मैंने सर पे बांधने के लिए इसे क्या कहते हैं, स्कार्फ कहते हैं। स्कार्फ जो है मैंने सर पे करने के लिए गया और अगर वहाँ पे गर्मी हुई तो उसको सर के ऊपर लेने के लिए ताकि धूप की वजह से, तो ये मैंने किया। और ये बेल्ट है ये मैंने की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाइट कलर की, वैसे आप दूसरा बैग भी पहन सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं मगर ये जो है ये एहराम के साथ सही फिट हो जाती है। आप पेट में बांध सकते हैं जैसे आप एहराम बांधते हैं, उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं। इसमें आप अपना स्टफ रख लें। इसकी काफ़ी पॉकेट्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 पॉकेट्स है और एक इसमें जो आप अपनी कोई भी छोटी चीज़ या पेन वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो वो आप रख सकते हैं। अपने फोन मोबाइल के पीछे भी आप देखें जिप लगी है, आप उसमें करेंसी वगैरह आप ये रख सकते हैं और इजी होके आप वॉक उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वाइट कलर की है, लोग अपना भी बैग सकते हैं, ब्लैक भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट स्टाइल भी हो सकते हैं, वो अपना वो लेके कर सकते हैं। और ये है, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस तरह पैक है, ये मेरा एहराम है। और मैं इंशाल्लाह जब मेरी फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से लंदन हीथ्रो टू सऊदीया, तो जहाँ पे लंदन हीथ्रो टू जद्दा, तो जहाँ से जैसी मिकात का अनाउंसमेंट होगी प्लेन में तो फिर मैं अपना एहराम वहाँ से, जैसी भी मिकात की अनाउंसमेंट होगी प्लेन में तो फिर मैं ऊपर प्लेन में अपना एहराम बांध लूँगा। ठीक है। और ये मैंने अपना जुबा किया था। अब मेरा साइज़ जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, जुबा पहनने के लिए वहाँ पे वेरी फाइन क्वालिटी से। और वहाँ पे मुझे पसंद है थोड़ा सॉफ्ट नरम सा कपड़ा हो, ना कि मुझे हार्ड वगैरह पसंद है। मगर ये मैं पहनने के लिए किया था, मगर ये ठंडा सा कपड़ा है। वहाँ पे ज़्यादा अगर गर्मी हुई तो ये दोनों जगह तक, अगर थोड़ी ज़्यादा उधर रात के टाइम पे अगर वेदर थोड़ा चेंज हुआ तो उसमें भी चल जाएगा और अगर ज़्यादा थोड़ी गर्मी हुई तो उधर भी चल जाएगा। A few moments later. चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं जिसमें ये में शाहरुख का एहराम है, ये बुनैन्स हैं और ये कैप्स हैं शाहरुख की, ये भी कैप है, ये स्कार्फ है और ये सॉक्स हैं, ये ट्राउज़र है ब्लैक में एक रात को सोने के लिए। इसी नाम से मेरा टिकटॉक पे भी है शाह फैमिली और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है जेद्दाह एंड शाह फूडी फाइंड्स, और उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो मेरा खाने का चैनल है, उस पर जितनी मेरी खाने की जर्नी होती है वो उसमें मैं दिखाता हूँ। उसका मैं फिर से रिपीट कर दूँ, उसका है जेद्दाह एंड शाह फूडी फाइंड्स। और जो मेरा फर्स्ट व्लॉग जिस पे होने जा रहा है वो है शाह फैमिली का,
और वो मेरा चैनल टिकटॉक पे भी है, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शाह फैमिली के नाम से। The next day. हाय गाइस, हमारी सुबह फ्लाइट है, हम जा रहे हैं टर्मिनल 4 से और हमारी फ़्लाइट का टाइम है 7:10। हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है लंदन हीथ्रो टू जद्दा एयरपोर्ट। तो अभी हम कैब पे हैं और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह व्लॉग का आपको दिखाएंगे। फिर हमारी हम वहाँ से ट्रांसफ़र हैं, 1 आवर की ड्राइव है वहाँ से मक्का की बाय रोड। तो आप साथ रहिएगा, आपको ब्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? हाँ, इसको साथ कर देना। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और बस दिस इज़ आवर टर्न। We arrived at the airport earlier than expected. So we decided to explore the duty-free shops. Watch as we check out some amazing perfumes and stylish glasses. And browse other interesting items. It was a fun way to kill time before our flight. Since it was early morning and we hadn't eaten anything, we decided to grab a tuna sandwich and coffee from Costa Coffee. हाय गाइस, अभी हम कोस्टा कैफे में आए हैं और दोनों सैंडविच खा रहे हैं। बड़ा गर्म है। 2 hours later. Finally, the moment we had been waiting for arrived. It was time to fly to Jeddah for our very first Umrah. Our hearts were filled with excitement, gratitude, and a bit of nervousness, knowing we were about to embark on this spiritual journey. As we walked toward our flight, we couldn't help but reflect on how blessed we felt to have this opportunity. It was a mix of emotions, happiness, anticipation, and a sense of peace knowing we were about to visit the holiest places in Islam. Stay with us as we take you along on this unforgettable journey.
After boarding the plane, we settled into our seats, still processing the reality of this incredible journey ahead. Our flight was a direct Saudi Airlines flight to Jeddah, making the experience even more convenient and comfortable. As the plane took off, we whispered prayers, feeling thankful and hopeful for a safe flight. Looking out of the window, we couldn't help but imagine what it would be like to step foot in the Holy Land. The flight felt special, not just another trip, but a journey with deep spiritual meaning. Shortly after takeoff, the Saudi Airlines crew welcomed us warmly, making our flight even more comfortable. We were given complimentary water bottles and juice, which was refreshing after a long morning. To our surprise, we also received a small toiletries kit that included a pair of socks, an eye mask for sleeping, a toothbrush, and toothpaste, a thoughtful gesture that made the journey more relaxing. The crew came around with different food options, offering something for everyone. Not long after that, it was time for Nida decided to have rice with chicken, which smelled delicious and tasted even better. Shara opted for the meat pasta, which was flavorful and perfectly cooked. The meal portions were generous, and the service remained exceptional throughout the flight. Having a warm meal while flying towards such a meaningful destination made the experience even more special. Feeling refreshed and satisfied, we continued our journey with excitement and gratitude in our hearts. When we approached the Miqat, we performed wudu on board, wore our ihram, and recited the intention niyyah for Umrah with heartfelt sincerity. We also prayed the 2 rakats of Nafil prayer, asking for forgiveness. Our hearts were filled with gratitude, hope, and an overwhelming sense of peace. Every prayer we recited felt more meaningful, knowing we were heading toward the holiest places in Islam. Ready? After a smooth flight and heartfelt prayers on board, we finally landed in Jeddah, the gateway to the holiest places in Islam. The excitement and spiritual anticipation grew as we stepped off the plane. Realizing we were now just hours away from starting our Umrah journey, our first stop at the airport was the baggage claim area. To get there, we took a short train ride inside Jeddah Airport, which was modern, spacious, and well organized. The ride felt like the beginning of our spiritual adventure, bringing us one step closer to our destination. After collecting our luggage, we waited for my mother and aunty, who were flying in from Lahore on the same Saudi Airlines flight. The wait felt special, knowing we would all be performing Umrah together as a family made the moment even more meaningful. We kept checking the arrival board, feeling excited and emotional as we prepared to reunite with them. Finally, we saw them coming through the arrivals gate, and our hearts were filled with joy and gratitude. With our family together, our spiritual journey felt complete, and we were ready to begin this once-in-a-lifetime experience. Stay with us as we continue this unforgettable journey toward Makkah. After my mother and auntie arrived safely, we were finally ready to begin our journey toward our hotel.
in Makkah Infinity Hotel. Excitement filled the air as we boarded our private transport from Jeddah Airport, heading toward the holy city of Makkah. The drive was peaceful and filled with breathtaking views of the majestic mountains surrounding the blessed cities of Jeddah and Makkah. The sun gently illuminated the rocky landscapes, adding to the spiritual feeling of being in this sacred land. Every mile brought us closer to fulfilling a lifelong spiritual dream, making the journey even more special. After a smooth drive, we finally reached Infinity Hotel Makkah, where we were greeted with warm hospitality. We quickly checked in, left our luggage in our rooms, and freshened up, eager to begin the most important part of our journey. Without wasting any time, we made our way toward the Haram, hearts filled with devotion and anticipation. It was finally time to perform our very first Umrah, an experience we had dreamed of for so long. Stay tuned as we share the most emotional and unforgettable moments of our first Umrah in Makkah.